Hello, children. Welcome to your chemistry class, and we are in chapter 18 Wastewater Story. So, in the first video, I had told that what is wastewater. Okay, today we are going to see how can we treat the wastewater for its reuse. Okay, so let's come to the topic of today. Today we will see wastewater treatment plant, means the wastewater which comes out from the drains, how it can be treated for further use. So the processes which are included in this, the first step, it is bar screen. The water passes through a bar screen. I will explain everything. Second, it will move through a grit and sand removal tank. The third step is water clarifier, and the fourth step is aerator. Okay, air is pushed into the water. So these are the four steps, okay, which are necessary for wastewater treatment. Now let us see one by one what are the processes. Now, treatment of wastewater, whatever wastewater comes out, it involves physical, chemical and biological process. Okay, means physical means some waste may be removed by hand, some waste, part of the waste will be removed by putting a chemical, and some part will be removed by your bacteria, aerobic or anaerobic bacteria. Okay, so let us see one by one. The first step, the wastewater is passed through screen. See here, this is the first step, bar screen. You are seeing here जाली जैसा चीज़, छलनी जैसा चीज़ लगा हुआ है जैसे वेस्ट वाटर पार हो रहा है. So what will happen when the waste water passes through the screen? Large objects like racks, skin, can, plastic packets, napkins are removed. Means whatever large pieces, जब waste पानी, गंदा पानी ये बार स्क्रीन के अंदर से जाएगा तो जो भी बड़ा पीसेस उस पानी में हैं वो वहाँ पे अटक जाएगा. फिर सेकेंड, now this water goes through the grit. Now what is a grit? Grit means particles of sand, gravel, थोड़ा particles of solid particles जो पानी में मिला हुआ है, that is a grit. Now when the water goes to a grit, the sand removal tank, the speed of incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down. अब जब water बार स्क्रीन के बाद इस एरिया में आता है तो क्या होता है, वेस्ट वाटर में जो भी सैंड पार्टिकल्स है, स्टोन्स है, पत्थर है, कुछ हैवी सॉलिड्स होंगे, वो क्या करते हैं, इसके थ्रू पास होके नीचे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैवी है वो नीचे ही सेटल हो जाएंगे पानी के. नाउ थर्ड, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल ऑन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टुवर्ड्स द मिडल. अब इस पानी को हम लोग एक टैंक में भेजेंगे जहाँ स्लोपिंग पोर्शन है मिडिल में, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे जाएगा उस एरिया से, और सॉलिड्स लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर. अब यहाँ पे क्या होता है, सेमी सॉलिड पार्टिकल्स जैसे एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट वो इस जगह में रिमूव होता है. इस एरिया में ह्यूमन solid particles and animal solid particles are settled down and are removed, and the solid human feces settle at the bottom and are removed with a scraper. This is known as sludge. और जो human और animal solid particles settle होता है इस एरिया में उसको हम लोग बोलते हैं sludge. Okay, now the skimmer removes the floatable solid particles like oil and grease. Water so cleared is a clarified water. अब इसमें पानी में जो ऑयल एंड ग्रीस भी रह सकता है वो भी इस पोर्शन में रिमूव हो जाता है, तो इस पानी को अब हम लोग क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं. मीन्स वो पानी जिससे सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव हो गया है, बड़ा पार्टिकल्स जैसे प्लास्टिक्स, क्लोथ, बोरा वो रिमूव हो गया है, ह्यूमन एंड एनिमल सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव हो गया है, उस वाटर को हम लोग बोलेंगे क्लैरिफाइड वाटर. ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये क्लैरिफाइड वाटर जो है, अब जो स्लज है सेमी सॉलिड पार्टिकल वो तो सेटल कर गया है नीचे,
अब ये क्लैरिफाइड वाटर को एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू उसमें क्या होता है, इस पानी को मिलाया जाता है। क्लैरिफाइड वाटर के साथ एरोबिक बैक्टीरिया दोनों को मिलाया जाता है। तो अब क्या होता है, देखो जब एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे मिक्स होता है पानी के साथ, व्हाट विल हैपन। अब क्लैरिफाइड वाटर से जो स्लज निकला है वो क्या होता है, दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसमें मिलाया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो anaerobic bacteria, what they will do, you know what are anaerobic bacteria? They respire in absence of oxygen, so they will produce gas which is known as the biogas. Okay, biogas plant, गोबर गैस जिसको बोलते हो, यही प्रोसेस है। So this anaerobic bacteria by using the sludge produces biogas which can be used as a fuel and produce electricity. Clarified water, what it is being done, it is mixed with aerobic bacteria. Aerobic bacteria, what it does, it consumes the human waste, food waste, soaps and other unwanted particles which are still in the clarified water. Means aerobic bacteria clarified water का और ज़्यादा सफाई करता है। And with the help of aerobic bacteria, what happens after several hours? The suspended microbes settle at the bottom as activated sludge and the water is then removed from the top. And what happens when the aerobic bacteria acts on clarified water, water और थोड़ा प्यूरिफाई हो जाता है and उसमें जो और गंदगी है वो नीचे सेटल हो जाता है and the water is comes to the top, and this water is then used for various purposes and it can be discharged into the sea and river. Okay, means अब ये पानी जो इतने ट्रीटमेंट के बाद समुद्री या लार्ज वाटर बॉडीज में जाके मिलते हैं, it is not harmful. Okay, so this is all about wastewater treatment process. फर्स्ट क्या है, पानी जाली के थ्रू जाता है जहाँ पे बड़ा चीज़ जो फंसा हुआ जैसे बोरा हुआ, कपड़ा हुआ, पेपर हुआ, वो लोग रिमूव होता है। फिर सेकंड, ये लोग ग्रेट और रिमूवल टैंक में जाते हैं जहाँ सॉलिड पार्टिकल्स, हेवी सॉलिड पार्टिकल सेटल हो जाता है। थर्ड, दे पास थ्रू अ वाटर क्लैरिफायर जहाँ से स्लज रिमूव होता है और ऊपर जो पानी जमा होता है उसको एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू ट्रीटमेंट होता है एंड देन पानी जो है वेस्ट वाटर इज फुली ट्रीटेड। नाउ our responsibility also, it is our responsibility also to become an active citizen. Means how waste generation can be stopped by human. वेस्ट कैसे होता है, वेस्ट प्रोडक्शन हमारे कारण ही होता है। हम लोग जो पानी ड्रेन से बाहर निकल रहा है उसमें जो गंदगी मिला हुआ है उसमें हमारा हाथ भी बहुत बड़ा हाथ है पानी को गंदा करने में। सो it is our responsibility also to become active citizen and reduce waste generation. Okay, because you know when we cross through a dump yard, when we cross through an open drain, it smells awkward. So जैसे ड्रेन एक फ्लो कर रहा है उसमें हम ही लोग कचरा फेंक के उसको और गंदा बना देते हैं। सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल, we have to be more cautious. Okay, see here it is given, become an active citizen. Waste generation is a natural part of human activity. Humans जो है आपके घर में everyday waste production होता ही है, but we can limit the type of waste and quantity of waste produced. but अगर हम लोग सतर्क रहें तो ये waste जो हम लोग produce कर रहे हैं उसमें कमी आ सकती है। Often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drain is disgusting. The situations worsens in rainy season, और जो whatever drain is there which are uncovered during rainy season, what happens, it becomes more worse. The water overflows and it smells, the condition becomes unhygienic. We cannot live there. Flies and mosquitoes and other insects also breed. So
We should be careful to not leave the drains uncovered and not to clog the drain. Even in houses, like every day, some waste are being produced, like cooking oil and fat should not be thrown into the drain. बहुत बार होता है कि तेल जो बच गया है हमें यूज़ नहीं करना है, सिंक में हमने डाल दिया, तो सिंक में डाला तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, पाइप के थ्रू बाहर आएगा एज अ वेस्ट वाटर. Then there are many paint solvents, motor oil, medicines, okay, that also comes out from our house. This is also part of wastewater, so we should reduce the use of these all things throwing in the open. And one more important thing, if we are not clean, if our environment is not clean, if our environment is contaminated, there is not proper sanitation, then there will be spread of disease. In our country, we know now also in many houses the proper toilets are not there, so people go in open grounds. तो इससे क्या होता है, if people excrete in open ground, they cause water pollution and soil pollution, and the surface water and the groundwater get polluted. And groundwater is a source of what? They are source of tube wells. So if we drink this type of water, we may fall ill. Okay, like waterborne diseases like cholera, typhoid, hepatitis, dysentery will attack people. So we have to be cautious. Okay. Now government is taking initiative, okay, to see that proper sanitation is maintained. या आप देख सकते हो इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या हो रहा है कि गांव-गांव गवर्नमेंट देख रही है कि गांव के हर घर में बाथरूम टॉयलेट का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ताकि लोग जो है वो बाहर जाके ये डिफिकेट नहीं करे. ओके, so the government is also taking proper steps to see that proper sanitation drive is carried out even in public places. आप देखते होगे अभी हमारे रांची में भी सार्वजनिक टॉयलेट का निर्माण किया जाता है, ताकि पीपल जो है वो बाहर खुले में जाके टॉयलेट वगैरह नहीं करे, एक प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर डिस्पोजल हो, ओके, ताकि डिजीज़ ना फैले. सो इवन इन आवर पार्ट, ये हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दें. वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकल रहा है उसको कम निकालें, और ये ध्यान रखें कि जो वेस्ट हमारे घर से निकल रहा है वो वाटर को पोल्यूट नहीं करें, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखें. ओके, प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल रखें, so that we may be healthy, our society may be healthy, and we can have a clean environment for living.